Everyone. I'm Sophia Humayun. As a part of our tribute to the people of Palestine, I welcome you all to the Gaza Monologues. These monologues are innocent and proving, which were recorded by the young Palestinians in 2010 amid bombardments of Israeli forces in Palestine. They represent a narrative that transcends cultural and religious barriers, expressing solidarity with oppressed and creating a more constructive dialogue, a contact zone in a third cultural space, which is nothing but human. That's what is Dosti, friendship, all about. Our esteemed participants presenting renditions of these poignant stories include, I welcome all of the monologuers to the stage now. Faryad Ali Gohar, who is a novelist, filmmaker, and political economist. Hafiz Tahir, producer, director, poet, and media studies academic. Ahmed Bilal, professor in PU, runs a theatre group called Natik. Sadia Samad, storyteller and founders, Suno Kahani Meri Zubani. Aisha Bilal, a professor and documentary photographer. We also have Ajoka's Naseem Abbas and Anika, and they will be singing Faz's poem, Lullaby for a Palestinian Child. We are particularly pleased to welcome Monica Hennigan and Leah Baker from Unlimited Collective based in USA. They are artists and activists who arrived just yesterday to join us for the monologue readings. Monica and Leah have previously read Gaza Monologues in the US and have worked with Palestinian theater groups in the West Bank. Now, before we begin with the Gaza Monologues, we'll have a look at the song, Palestine Will Be Free.
why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone, getting my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. Rawan Jarur, age 14 years. Relax girls, कुड़ियों घबराना नहीं जे, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होया. This is just the sound of aimless shooting. That's what our teacher said as soon as the bombing started. After a while, her mobile phone rang and she spoke a few words only. 120 shaheed. She smashed her mobile onto the floor and told us, "Kar jao, kudiyo, kar jao, go home." As soon as we went out into the yard, सानू अपने माँ पे नजर आ गए. किसी ने पजामा पाया होया सी ते कोई अपनी बनैन में चेता सी ते कोई नंगे पैरी. We were very scared. My two sisters and I kept waiting for Dad, but he was really late. ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, even though it's a long way. On the way, I saw something for the very first time. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, with banners around him and people crying. But the weird thing is that the funeral barely had 30 people in it. Funerals of martyrs usually have thousands. Then I felt that मुल्क च कोई वड्डी गल हो रही है, कोई वड्डा मसला है. I got scared for Dad. मैं घबरा गई अब्बा जी वास्ते. I didn't want him to come get us because I was scared. डर लगता सी मैनू. He'd be hit by a rocket. I was also scared of dying. I didn't want to die now. मैनू भी डर लगता सी. मैं हाले मरना नहीं सी चाहती. Because it would be a catastrophe if I died. मैं मर जाती तो मेरे जनाजे पे कोई भी ना आंदा. And no one came to my funeral. I started running home and people were running around. जिवे क़यामत बर्पा हो गई.
It was doomsday. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ. Because the sound of the rockets didn't stop. Every few seconds a rocket would fall ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਰਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. It would shake the ground. I felt that the streets were not the same streets. Nor were the people the same people. Strange sights, sounds and smells. After the war, a lot of things changed inside me. जंग ने जेड़ी तोड़ फोड़ मेरे अंदर कीती है, उन्हें मैंने बदल के रख दिता है. I started hating going to the bathroom. From the second I go in, I can't wait to come running out because har velu mainu dar lagta si that I'd be hit by a rocket and while I'm in the bathroom. And there, one would be in great focus, you know. I also started hating the morning line in school. When the war started, I was in the line. That's why today I feel that the minutes in the line are hours of fear and worry. All school for me is one pile and the line is another. I started having terrifying dreams. Pehdiya, khaufnaak khabar. All night I had a conflict within myself between desire to sleep and fear of nightmares. Sleep became a monster. I don't know when I slept and when I woke up. नींदर मेरिया अखा दे पोटियां दे पिछे होया एक जंग बन गई सन. सवेर होन तक पूरे मैं इस तरह जागदी सुनदी जागदी रहंदी. मैं एक अदाकारा बनना चाहती सा. I wanted to become an actress. And this is a hard dream to fulfill in Gaza, especially for girls. I tell myself it's a shame for people in Gaza to be deprived of my talent because, you know, I could become an important actress. But if they don't want me, to hell with them. I'll go to any country and act there. Gazans are deprived of everything anyway. It doesn't stop here, and it doesn't stop at theatre. Sometimes I think people in Gaza can barely find food. How are they going to go to the theatre? You know, I wish I could live in a civil, democratic society with peace. Jithe vi cinema hoon te main filmaं vekhdi rahaं and keep flying in my imagination and dreams. Mere zehn vich bas eho hi ek ख्वाब hai te eho hi ek ख्वाहिश hai. Age 17, Urdu translation by Kenneth. A day before the war, Gaza for me was joy and happiness. Trips and going to the sea, life seemed to be happy. And I wasn't thinking about anything. जंग से एक दिन पहले तक नाम था गाजा, एक मुसर्रत और खुशी का. सैर सपाटे और समंदर, ना कोई सोचें ना कोई फिक्र. I had one dream that Gaza would develop in arts and sports. I felt that everything was fine except these two things. But it turned out nothing was fine. No art, no sports, no health, no safety. It's all मेरा एक ही सपना था, आगे निकले गाजा, फन और खेल के मैदान में आगे निकले. मुझको यूं लगता था जैसे सारा कुछ है ठीक सवाए दो चीज़ों के, फन और खेल. बस थोड़ा सा फन और खेल को बेहतर कर लें. लेकिन फिर मैंने जाना कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं था. सेहत हो या लोगों की हिफाजत, सब कुछ खेल और फन जैसा था. Gaza stopped being the city of my dreams because my dream is to become an actor. Am I going to win? I
I going to be an actor for 20 people in Gaza? And wait till the border opens? गाजा पहले जो एक शहर था मेरे ख्वाबों का, अब वो वैसा शहर नहीं था। मेरा ख्वाब था एक्टर बनना। मैं किसको अपना फन दिखलाऊं? गाजा में अब लोग हैं कितने? बॉर्डर खुलने तक मैं अपनी ऑडियंस कहाँ से लाऊं? If it was in my hands, I would try as much as possible to reduce wars, deaths, and violence. I hate the silence and the abnormal tolerance that people have. I wish all Gaza would wake up tomorrow and walk the streets shouting loudly, "Enough!" मेरे बस में होता तो मैं जंग, जराइम और अमवात को कम करने की हर मुमकिन कोशिश करता। नफरत है मुझे चुप से लोगों की बेईमानी बर्दाश्त से नफरत है। नफरत है मुझे चुप से लोगों की बेईमानी बर्दाश्त से नफरत है। चाहता हूं मैं जाग उठे अब शहरे गाजा और गलियों में गूंजे आवाजा, बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। जंग छिड़ी थी जब हम सब फुटबॉल खेल रहे थे। नामोनूस माहौल फलक पे लाली थी, यकदम खामोश फिजा को एक आवाज ने चीरा। आवाज जंगी जहाज की ऐसी जैसी सुनी नहीं थी पहले। हम सब खौफसदा से होकर जमीन पर लेट गए और तकने लगे मौत का रास्ता। फिर कुछ गज की दूरी पर हुआ एक धमाका, जोरदार धमाका। तकने लगे हम एक दूसरे के चेहरों को और ज़बाने खामोशी से कहने लगे, अलविदा दोस्तों, अलविदा। पता चला फिर बम धमाका हमारे लिए तो नहीं हुआ था, वो तो ऊपर वाली सड़क पे चलती गाड़ी में कुछ मुलजिम थे उनके लिए हुआ था। लेकिन हम वहीं पड़े पड़े सोच रहे थे अगला बम धमाका जाने कब हो जाए। इस हालत में फिक्र थी मुझको अपने दोनों भाइयों की, साथ मेरे जो खेल रहे थे। क्या वो दोनों जिंदा होंगे? क्या वो दोनों जिंदा होंगे? खुद से ज्यादा उनके लिए मैं खौफसदा था और मुझे लगता है वो भी यकीनन ऐसी ही तशवीश में होंगे। मैंने देखे उस गाड़ी में 3 शहीद जिनके चेहरे मस्क शुदा थे। एक की टांगें झुलस चुकी थीं, पथराई आंखें सिर्फ मुझे ही घूर रही थीं, जैसे कहना चाहती थी कुछ। मैं कुछ समझ ना पाया, ये तो बाद में जाना मैंने। मुझे बचाना चाहता था वो मेरी जानब बढ़ती मौत से। Then I knew the real meaning of death. And instead of being 3 martyrs, they could have been 4. I was shocked at the scene. I stood there watching. And when I woke up, after passing out, I went home. तब मुझको मालूम हुआ कि मौत के असली मानी क्या है, और ये कि इन तीनों के संग चौथा मैं भी हो सकता था। मैं ये मंजर देख के गुम था हैरत में, और फिर जब होश में आया घर की जानिब सरपट भागा। After the war, everyone started lying to everyone else. Lies, cheating, dishonesty, deceitfulness. For positions and interest, the leaders and the powerful people commit slaughters and crimes without batting an eyelid or feeling any guilt. Poor people get poorer and sick ones sicker. जंग का तोहफा, गलत बयानी, धोखा और एक बेईमानी। ओहदे और मुफाद की खातिर ये लीडर और ताकतवर सब बेहस होकर पलक झपकने से भी पहले कत्लो गारत करते हैं। मुफलिस्तर और लागर और भी लागर हो जाते हैं। I have lost trust in all Hutus. The biggest speech from the biggest leader is a bullshit. All speeches in the world don't warm up a cold person,
or someone sleeping in a tent after the war. The crisis is that the whole world is watching us, as though there is nothing going on, and they are still making speeches. दुनिया के सब नारे झूठे, सबसे बड़े लीडर की हर तकरीर भी बस बेमानी है। दुनिया भर की सब तकरीरें मिलकर भी खैमे में लेटे भेकर शख्स के ठिठुरे बदन को गरमाइश नहीं दे सकती। दुनिया भर की सब तकरीरें मिलकर भी खैमे में लेटे बेघर शख्स के ठिठुरे बदन को गरमाइश नहीं दे सकती। दुख तो ये है, दुनिया ऐसे देख रही है जैसे कुछ भी हुआ नहीं है, और वैसे ही जोर शोर से जारी हैं उनकी तकरीरें। बहुत शुक्रिया। Ashraf Ahmed Sawasi, 11 years old. My brother, Khalid. All the neighborhood kids loved him. He was calmer than a breeze. He would take his pocket money from my father and give it to me. Everyone loved him. His friends came and he went with them to school. They went out running like butterflies, flying off the ground like the world was created for them. The Israeli planes were in the air. The sound of the helicopter was like a monster waiting to pounce on its prey. A car of wanted men was driving along Yarmouk Street, and the butterflies were near that car. The butterflies didn't know that the car would be the fire that would burn them. A rocket fell on the car. My brother Tariq flew 5 meters off the ground. He flew higher than the car, then came down walking. Nothing was the matter with him. The ambulance came and took the corpses. The people told him to get into the ambulance, but he told them, nothing is the matter with me. And he kept on going to school. 100 meters later, he put his hand on his heart and he fell down, a martyr. I was in the street waiting for the school bus, and my sister told me, go, see what's going on. I did, but I didn't see Tariq, and I went on to school. While I was in the class, my uncles came and told me, you will take 3 days off school. I didn't suspect anything. We got it in the car, and my uncle told the driver, turn off the news. Then I started getting suspicious because my uncle loves the news. We got home and there was a big crowd of people around. Before I got down, I saw my father sitting on the chair and crying. It was the first time I saw my father cry. He was holding a picture of my brother, Khalid. I asked him, Papa, was my brother martyred? Papa, he said, may Allah have mercy on him. The ambulance brought him from the hospital. We all ran to him to say goodbye. He was sleeping like an angel, with the book that he'd been carrying still in his hands. My father refused to let us go with him to the cemetery, but I got in the car, and I went, and I said goodbye to him.
going for 3 months every day to sit at his grave and to talk to him, my brother, Tariq. At night, I stare at his picture in the room with the hero martyr, Tariq, written on it. Since my brother was martyred, I got used to sleeping in the bed alone. We used to sleep one on top of the other, legs on top of heads. Sometimes it felt like all our limbs were jumbled together. But today I have a bed by myself. I am alone. I will never forget my brother. Age 14. When I was young, I used to feel I was the happiest child in the world. But the more I grow and my mind grows, the more my worry grows. Because I start to understand things that I did not. I started to know the meaning of a deprived child. The thing that upsets me and makes me cry the most are children's tears. All children in the world, regardless of their nationality or religion or color. When I grow up, I want to be a pediatrician. And that's the hope that gives me a big push in life. Even though I'm fed up, bored, and sad because Gaza doesn't have any life anymore. Yesterday, I was sitting in school and I heard the sound of planes. And I got really scared. I wanted to run away from school. I felt I was going to die because I remembered the war. The scenes of war won't leave my mind. On the third day of the war, my family was sitting together, talking about what was happening in the war. And my grandmother was reassuring us so we wouldn't be scared. We were actually calmed. Even though the sound of rockets didn't stop, my grandmother's warm voice was calming us. The phone rang. The lines never caught in the war, so when we heard the sound of the phone, we were happy. Hello? Yes? This is the Israeli Defense Army. You have 5 minutes to clear the house. It's for your own benefit. We have warned you. I couldn't stand on my legs anymore. Everyone in the house started yelling. My grandmother was the first one to run away. It was the first time I'd seen her go so fast. My dad held me and my sisters and told us not to be scared. She was pulling me to leave, but I was going to die if I didn't take my teddy bear with me. I felt that I would betray him if I left him under the bombing. I escaped from Dad's hands and ran to my bear and took him in my arms and left. We all got far away from the house and sat down to wait for the 5 minutes. They were the longest 5 minutes in history. They became 10. We felt like they were years that passed. I was in a whirlwind. Thoughts and dreams were thrashing about in my head. The world was spinning. I felt that the dream of being a doctor was very, very far away. I held the bear, and I remembered myself when I was small, how I was always laughing. I want to go back to being small and stay small.
I don't want to grow up. But the only thing that comforted me was the love of people who didn't leave us. Gaza is full of love. फैज साहब की लोरी फलस्तीनी बच्चे के नाम। अम्मी की आंख लगी है। कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत दी है। कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। कुछ ही पहले तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो बच्चे, मत रो। तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहलाए गए हैं। चंद्रमा दफनाए गए हैं। तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहलाए गए हैं। तेरे आंगन में चंद्रमा दफनाए गए हैं।
अब्बा, बाजी, भाई, चांद और सूरज, तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। तू मुस्काएगा तो शायद सारे एक दिन भेस बदल कर तुझसे खेलने लौट आएंगे। age 15 years, Al-Saftawi Street. मैं और मेरी दादी हम घर पे अकेले थे. She was telling me stories about the days of our country, funny stories and sad ones. But she never told me a complete stories because आधे रास्ते में उन्हें गौसल खाना जाने की हाजत महसूस होती. She always had to go to the bathroom. मेरी दादी अपना आधा वक्त कमरे में और बकाया वक्त गौसल खाने में गुजारती. My parents came back at 10:30 at night and went to sleep straight away. मुझे नींद नहीं आ रही थी. मैं जाग रहा था, doing my homework. Suddenly, I heard the noise of a distant explosion. I went to my parents' room and took the radio to hear the news. मैंने बाबा को जगाया और उन्हें बताया कि बाबा, बाबा, I heard the sound of a strong explosion. He said, be quiet. अपने बिस्तर पे जाके पड़े रहो. कुछ नहीं हुआ. It's just aimless shooting. ये तो बस यूं ही पटाखे वगैरह की आवाज होगी. Anyway, I went back to bed and the electricity was out. अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. I pulled my blanket and covered my face and something fell on me. I raised the blanket off me and with all my strength and it was the frame of the window that had fallen on me. कंबल शीशे से भरा हुआ था और हमारा पूरा घर काले धुएं से भरा हुआ था. It was the day they hit the workers' union right next to our house. But that's not the point. The point is the stupid things that happened and which I can't have an explanation for. दुनिया को आग लगी हुई थी. And we all felt we would die. But my grandmother was looking for her false teeth. दादी अपने जाली दांत ढूंढ रही थी. उन्हें डर था कि वो मरेंगी तो लोगों को कहीं पता ना चल जाए कि उनके दांत असली नहीं है. As if they didn't know it already. Second, the house was full of smoke, but my father lit a cigarette and smoked. गोया हमें मज़ीद धुएं की ज़रूरत है. Third, my uncle called to make sure we were okay, and my father told him that we're all fine, thank God. But that all the windows of the house were broken except one. चाचा ने बाबा को कहा कि जो एक बच गई है वो भी तोड़ डालिए, और बाबा ने वही किया.
And I don't know why I'm telling this story. All I know is that we are living in a cage, a prison. Like an encaged bird, बंद परिंदा, जो बाहर आना चाहता है लेकिन उसका मुहासरा कर लिया गया है. Kids are dying. They're dying in front of their mother's eyes. माओ के लखते जिगर उनके सामने आखिरी सांसें ले रहे हैं. Hearts are crying for them and screaming in the loudest voice, but no one hears. No one's heart softens and no one seems to care. किसी को परवाह नहीं, किसी को भी परवाह नहीं, किसी को भी नहीं. ਅਲੀ ਅਲ ਹਸਨੀ 15 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ. ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਪਾਇਆ. ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਾਂ. ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਤੱਕੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ. ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ. ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੱਕਿਆ ਜੰਗ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਧਮਾਕੇ. ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ. ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਂ. ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:05 ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ. ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਦੇ ਵੇਖਿਆ. ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਦੇ ਵੇਖਿਆ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ. ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਸਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁਣ ਮਲਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਨਸਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਪੜਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂ, ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਆਈ. ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਟੱਟਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੜ ਗਿਆ. ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਲਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਗ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੈ ਸੀ. ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. Amani A. Sharafa, age 18. Gaza is a plane carrying people and traveling towards the unknown, landing neither in heaven nor in hell. No one knows when it will land, and people may stay suspended like that for twice my lifetime. All days here are the same. There's nothing new. The simplest thing is that dreams and wishes are hard to make true in Gaza, especially if they're like mine, to be an artist, singing and acting and playing music.
In Gaza, there's only music. Music is that of death and dancing on wounds. If I go abroad and study directing, how would society look at me? After I graduate, would the country be like now or worse? Everything for me is foggy and unclear, like people's faces on Friday at the Ferras market. And like the day the war began. The first hit was at the Ministry of Passports. My friend and I came out of an exam. It was the first day of the first term exams. We sat in front of the school gate talking and waiting for the rest of our friends so we go home together. Suddenly, there was a series of explosions. I was in shock and I felt that I was going to die. We ran away and I was really scared. I saw the women running and screaming and beating their faces, and I had no idea what was going on. I felt I couldn't stand on my legs and that the world started spinning. I fainted and I stopped feeling anything, and then I woke up to my friend's voice shouting, "Amani, for God's sake, wake up!" When I woke up, I started crying, not knowing where to go or what to do. An older girl helped me and took me home. And as soon as I arrived, my mother took me in her arms. I was very tired, but at that moment, I rested. I needed to fall into someone's arms. The hardest thing to feel is that your moment of death is near. The war was a black ghost that covered Gaza's day and night. It imposed its hell on people, on the earth and the sky and the air that we breathe. After the war, I had a breakdown. A big, wild wave overtook my soul. I was thinking I wouldn't be able to come out from under it. But it was like a hand was extended to me through the theater. A rubber ring that pulled me out from under the wave. Today, I feel a comfort that I haven't felt in a long time. And I hope that I can always stay like this. फ़लस्तीनी कौमी शायर जनाब महमूद दरवेश की नज़म, जिसका तर्जुमा जनाब अनवर सेन रॉय ने किया है। ज़मीन तंग हो रही है, हमें आखिरी रास्ते पर धकेल रही है। ज़मीन तंग हो रही है, हमें आखिरी रास्ते पर धकेल रही है। इसमें से गुजरने के लिए हम अपना एक एक उज़्व अलग कर रहे हैं। ज़मीन हमें जकड़ रही है, ज़मीन हमें जकड़ रही है। काश हम गंदुम होते, इस ज़मीन पर मरते और फिर जीतते। सोचता हूँ काश ज़मीन हमारी माँ होती, हम पर रहम खा सकती, हम पर रहम खा सकती। हम जाते और ख्वाबों के साथ पत्थरों पर नक्श हो जाते। आईनों की तरह उनके चेहरों को देखते, आईनों की तरह उनके चेहरे देखते, जिन्हें हमारे बाद इस ज़मीन के लिए जान देंगे। हमारे बाद इस ज़मीन के लिए जान देनी है। हम उनके बच्चों की ईद पर रोते हैं, हम उनके चेहरे देखते हैं जो हमारे बच्चों को उन खिड़कियों से बाहर फेंककर आखिरी आखिरी खला में फेंकते हैं। हमारा सितारा आईनों को आवेज़ा करेगा, हमारा सितारा आईनों को आवेज़ा करेगा। कहाँ जाएंगे हम वहाँ से जहाँ सरहदें खत्म हो जाएंगी?
कहाँ परवाज करेंगे परिंदे आखिरी आसमान के बाद, कहाँ सोएंगे आखिरी आखिरी हवा में सांस लेने के बाद। हम अपने नाम किरमिज़ी धुन से लिखेंगे, हम अपने नाम किरमिज़ी धुन से लिखेंगे, ताकि उनका इख्तिताम हमारी जिल्द पर हो। यही मरेंगे हम, यही मरेंगे हम, इसी आखिरी रास्ते में, और यही हमारे खून में नमो पाएंगे ज़ैतून के दरख्त। मैं गज़ा के लिए कुछ तहरीर करना चाहता हूँ। मैं गज़ा के लिए कुछ तहरीर करना चाहता हूँ, कुछ दिलनशीन अल्फाज, मगर नहीं लिख सकता। मैं गज़ा के लिए तहरीर करना चाहता हूँ, कुछ दिलनशीन अल्फाज, मगर नहीं लिख सकता। नामुमकिन है मेरे लिए देखना गुर्बत की मुसीबत को, महासरे की जिल्लत को, कहत के अजाब को, अमन के शराब को। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मैं गज़ा के वासियों के सैले रवां को शहर खाली करते और अल अरीश की तरफ हिजरत करते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मैं हर घर में महरूमी के इफरीत को दाखिल होते हुए, खौफ और बीमारी को हुक्मरानी करते हुए। आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या लिखूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या लिखूं? कुछ दिलकश अल्फाज, मगर मैंने यहाँ उदासी की हुकूमत देखी है। बच्चों, जवानों, बुजुर्गों और औरतों की रूहों को रोते और कराहते सुना है। कहाँ से लाऊं वो अल्फाज, कहाँ से लाऊं? एक समंदर ही तो है, एक समंदर ही तो है जो अपनी लहरों की मौसीकी से मुझे ख्वाब दिखाता है, ख्वाब दिखाता है, शराब दिखाता है। उसके किनारे पर खड़ा मैं महसूस कर सकता हूँ खुद को कब्रिस्त में सफर कर सकता हूँ, रोम की तरफ पर उड़ सकता हूँ, इटली की तहजीब देखने के लिए पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। मगर जब मैं इस तस्वुरे महज से जागता हूँ तो खुद को पाता हूँ महाजरों के कैंप के दरमियान अपने बिस्तर पर लौट आता हूँ गज़ा की हकीकत की तरफ। वीरान बाजारों में सांस घुट कर लेने वाले खामोश लोगों में लौट आता हूँ। क्लॉक की तरफ देखता हूँ, 11:25 पर
क्लॉक की तरफ देखता हूँ 11:25 पर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो जाती है और दिल में बनहाला रखने लगता है। लेस क्लॉक्स। हर उड़ने वाली शय से डर जाता हूँ, वो मक्खी ही क्यों ना हो। और मैं डरता हूँ इस खौफ के आश्कार होने से, मबादा लोग मुझे बुज़दिल समझें। मैं अपने बड़े भाइयों के लिए भी डरता हूँ कि वो मक्खी उन्हें भी हलाक कर देगी। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, भागता हूँ इस मंजर से, इन उड़ने वाली मुसल्लत मक्खियों के खौफ से। नहीं लिख सकता मैं दिलनशीं अल्फाज, नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता मैं दिलनशीं अल्फाज, नहीं लिख सकता कि वो मक्खी इन्हें हलाक कर देगी। और इसीलिए मैं फरार में रहता हूँ इन उड़ने वाली मुसल्लत मक्खियों के खौफ से। नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। In cases are gay or their children are killed. So I'm going to read an excerpt from a poem called Write My Name by Zaina Azam. Write my name on my leg, Mama. Use the black permanent marker with the ink that doesn't bleed if it gets wet. The one that doesn't melt if it's exposed to heat. Write my name on my leg, Mama. Make the lines thick and clear. Add your special flourishes so I can take comfort in seeing my mama's handwriting when I go to sleep. Write my name on my leg, Mama, and on the legs of my sisters. This way we will belong together. This way we will be known as your children. Write my name on my leg, Mama, and please write your name and Baba's name on your legs too, so we will be remembered as a family. Write my name on my leg, Mama. When the bomb hits our house, when the walls crush our skulls, our legs will tell our story.